Bismillahirrahmanirrahim. Respected students, today's topic is from the Pied Piper of Himalayan. This is our class 5th. From the Pied Piper of Himalayan. इसका ये नाम है जो ये यहाँ ये नज़म है, इसका नाम है फ्रॉम द पाइड पाइपर ऑफ हिमालयन. Into the street the piper stepped, smiling first a little smile, as as if he knew what magic slept in the quiet pipe the while. Then, like a musical slept adept, to blow the pipe, his lips he wrinkled, and green and blue his sharp eyes twinkled, little like a candle flame where salt is sprinkled, and ere three shrill notes the pipe uttered, you heard as if any army muttered, and the muttering grew to a grumbling, and the grumbling grew to a mighty rumbling, and out of the houses the rats came tumbling. Green rats, small rats, lean rats, browny rats, black rats, grey rats, tawny rats. Grave old plodders, grey young fiskers, fathers, mothers, uncles, cousins, cooking tails and pricking whiskers, families of tens and dozens, brothers, sisters, husbands, wives, followed the piper for their lives. From street to street he piped, advancing, and step for step they followed, dancing, until they came to the river Weser, wherein all plunged and perished, save one who shot as Julius Caesar swam across and lived to carry as the manuscript he cherished to Ratland whom his commentary Robert Browning. देखो क्या है मसला. असल मसला ये है कि एक शहर है जहाँ चूहों ने धूम मचाई. हर गली में, हर घर में लोगों को चूहों ने बहुत तंग किया था. लोग ये आस बैठे थे कि कोई ऐसा आदमी आए जो हमें इस जुल्म से निजात दिलाए. इसके लिए इन्होंने एक माहिर शहनाई नवाज को लाया. यहाँ इनका किस्मत है कि ये इस शहर में दाखिल हुआ. तो क्या हुआ, बंसरी नवाज यानी बंसरी बजाने वाले को ये इनटू द स्ट्रीट द पाइपर स्टेप्ड, जो ही इसने इसमें अपने कदम डाले, अपने कदम रखे, smiling first a little smile, as if he knew that magic slept in the quiet pipe the while. Then like a musical adept, ये क्यों, ये तो स्माइल ने मुस्कुराते मुस्कुराते इस शहर में दाखिल हुआ. क्यों, इसको पता था कि मेरे पास कौन सा जादू है, मेरे पास क्या तरतीब है कि जिसकी बदौलत मैं इन चूहों को अपने बिल्लों से बाहर निकालूँगा. ये अपने फन में माहिर था, अपने इसका जो इसको हुनर था इस पे इसका ये माहिर था, इसलिए इसको ये विथ कॉन्फिडेंस इस शहर में ये दाखिल हो. To blow the pipe his lips he wrinkled,
and green and blue his sharp eyes twinkled like a candle flame where salt is sprinkled, and the arrow three shrill notes the pipe uttered, and you heard as if in the army muttered. देखो क्या होता है. तो blow the pipe. अब ये इस पाइप को बजाने लगा, जिसकी वजह से पाइप को बजाने के लिए उंगलियों का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादा उसमें जो होंठ्स इस्तेमाल किए जाते हैं, होंठ भी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं. ये अपने इसको सांस की बदौलत इसका मतलब इसकी आवाज़ निकाली जाती है. एंड ग्रीन एंड ब्लू इसकी जो आइज़ थी, ये जो ये शहनाई नवाज़ था, इसकी जो ये पर्सनालिटी थी, ये इसके बारे में क्या था कि ये इसकी पर्सनालिटी कैसी थी. इसकी आँखें ब्लू थी, शार्प, टिमिक्लड. इन्हें टिमिक्लड माने गो. टिमिक्लिंग किसको कहते हैं? चमचमाना, उसको कहते हैं. टिमिक्लड मतलब कभी वो चमकता है, कभी वो गुम हो जाता है. जिस तरह जो रियल स्टार्स होते हैं, जो स्टार्स होते हैं वो टिमिक्लड होते हैं. वो जो स्टार्स नहीं होते वो कंटिन्यू वो टिमिकल नहीं होते हैं. इसी तरह लाइक ए कैंडल फ्लेम, इसकी आंखों में ऐसा ही होता है, कभी वो बंद हो जाते हैं और कभी खुली हो जाते हैं. जो ही ये इस पाइप को बजाने लगा. लाइक ए कैंडल फ्लेम वायर सॉल्ट इज स्प्रिंकलड. देखो कैसे इसको आंखों को होता है. दमा कितकन अच्छा ऐसे होता है. इन आंखों को ये होता है कि कभी ये खुली हो जाती हैं, कभी बंद हो जाती हैं. जिस तरह अगर हम जलते शमा पर नमक छिड़केंगे तो वहाँ क्या होता है, वो वहाँ भी वो चिंगारियाँ उठती हैं. तो ऐसे ही इसकी आंखों में ये जब जिसने यूं ही इसने ये अपना ये मतलब इंस्ट्रूमेंट गाना स्टार्ट किया है. एंड इरा थ्री श्रिल नोट्स द पाइप अल्टर्ड यू हर्ड एज इफ इन आर्मी मटर्ड. आपने सुना होगा जो ही इसने ये स्टार्ट किया है, ऐसा हाल हुआ जैसे कोई आर्मी कहीं जब मटर्ड करती है, मोटरिंग करती है, तो वहाँ क्या हो जाता है, कैसे लोग भागते हैं वहाँ से. grumbling and the grumbling grieved my rumbling and out of the houses the rats came trembling. जो ही इसने स्टार्ट किया तो घरों से ये चूहे बाहर निकलने शुरू हो गए. And out of the house the rats came trembling. Green rats, कैसे rats, green, great rats, small rats, lean rats, brownie rats, चाहे बड़े हो, छोटे हो, lean हो, brownie rats, black rats, ग्रे रेट्स, टाउन. इनके कलर ये मुख्तलिफ रंगों के रेट्स अब बाहर आने लगे. छोटे, बड़े, बूढ़े, जवान, काले, ब्राउनी, grey old polders, grey young fiskers, fathers, bobby, mothers, uncles, cousins, cocking tails and cocking. ऐसे अपने दुम हिलाते ये सब, चाहे फादर हो, मदर हो, कजिन हो, वगैरह हो, सब खानदानों के खानदान बाहर आने लगे. Followed the piper for their lives from street to street he pipe advancing. ये आगे इसको बजाता चला गया और पीछे इसके ये चूहों की एक मतलब एक बहुत बड़ी भीड़ इसके पीछे चलने लगी. Until they came to the river Weser, wherein all planked and pressured, save one who shot a jealous castle. देखो इसको जो ये मतलब जो ये शहनाई नवाज था, इसका मतलब था कि इस शहर को इन चूहों से खाली करे, इस शहर को लोगों को इन चूहों से नजात दिलाए. तो इसकी वजह से इसने ये जाते कहाँ गया, एक दरिया की जिसका नाम था जीलस, वहाँ ये पहुँच गया रिवर वेसर. तो इसके किनारे और वहाँ पहुँचे जब ये वहाँ पहुँचे तो इसने इनको वहाँ डुबवाया. इन्हें हाथों से नहीं, जब वो वहाँ से चला गया तो रेडो ने वहाँ ही उसको तैरना स्टार्ट किया, वहाँ इसको पार करना स्टार्ट किया. तो वो सब के सब उस रिवर में बह गए, डूब गए, मर गए. सिर्फ एक इनमें बचा जो एक माहिर तैराक था, जो एक माहिर तैरने वाला था. ये बहुत पावरफुल था, जैसे कैसरे रोम था.
تو جس کی بدولت اس نے خود کو بچانے مطلب اس کو یہ خود کو بچانے میں کامیاب ہوا. اور اے swam across and lived to carry as the manuscript his to read land whom his commentary. اور کہاں پہنچ گیا؟ وہاں ہی جہاں مطلب وہ ریڈ لینڈ ہوم تھا اس کا. تو اس طرح اس شہر کو بھی اس نے آزاد کیا. تو یہ ایک فن کی بدولت جو ہر کسی چیز کے لیے کوئی ماہر ہونا چاہیے، پڑھانے کے لیے ایک استاد ہونا چاہیے. اسی طرح اگر آپ کو مکان بنانا ہو تو اس کے لیے ایک اچھے نجار اچھے میسن کی ضرورت ہونی پڑتی ہے. اسی طرح آپ کو گاڑی چلانے کے لیے ایک اچھے ڈرائیور کی ضرورت ہوتی. تو یہاں بھی اس شہر کو جب یہ آفت پڑی تھی، یہاں چوہے ہر گھر میں موجود تھے، ہر بل میں موجود تھے، تو ان کو بھی اس ماہر کی ضرورت پڑی جس کو شہنائی نواز کہتے ہیں. تو جس کی بدولت یہ شہر اب اس بلا سے جو ان کو یہ بہت بڑی ایک پریشانی ہو چکی تھی، تو اس سے ان کو نجات ملی. دیکھو یہ لکھی ہے رابرٹ براؤننگ، یہ اس کا یہ رائٹر ہے. اس کا نام ہے فرام دا پائڈ پائپر آف ہمالین. ہو سکتا ہے کہ یہ پوائٹ ہے یہاں یہ اس کتاب سے بھی نکالی گئی فرام دا پائڈ، کیونکہ جہاں یہاں فرام ہے ہو سکتا ہے یہ اس دا پائڈ پائپر آف ہمالین کوئی بڑی کتاب ہوگی، اس سے یہ ہمارے لیے یہ پوائٹ ہے یہاں اس کو نکالا گیا ہے، تاکہ ہم نے بھی اس سے مزہ حاصل کیا اور ہم نے بھی اس میں کچھ نصیحت لی کہ کوئی کام کرنے کے لیے ماہر کا ہونا ضروری ہے. تھینک یو. انشاءاللہ اب ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے دوسرے ویڈیو میں. تھینک یو، شکریہ.